नमः। ॐ यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकराजस्मात् आनन्दसाम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरात्रं समुद्धृतं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। हम लोग योग वशिष्ठ का निर्वाण प्रकरण का उन्नत पूर्वार्ध 69वां सर्ग का आलोचन कर रहे हैं। उसमें क्या एक तो वशिष्ठ जी राम जी को समझा रहे हैं, वो जीवट की कहानी के अंत में उसके ऊपर सारा चर्चा हो रहा है और उसमें ज्ञानी लोगों का क्या हालत होता है इसके ऊपर भी चर्चा हम कर चुके हैं। योगा और ज्ञान ये दोनों का समन्वय अथवा दोनों के ऊपर विचार हम कर लिए हैं। दोनों को एक ही समझना और ये अलग अलग नहीं समझना, इसके ऊपर आखिर में हम ये विचार कर रहे हैं दोनों के द्वारा योग और ज्ञान मार्ग के द्वारा जो प्राप्तव्य स्थान है, जो आखिर परिणाम जो रह जाता है, अवशेष जो रह जाता है, जिसको हम परमात्मा परम ब्रह्म अथवा पुरुषोत्तम अथवा अक्षर अविनाशी कुछ नाम देते हैं हम, जिसका कोई नाम रूप है ही नहीं, नाम रूप से परे है। तो उस पद को प्राप्त होने के लिए जो परम शांत पद है, तो उसको प्राप्त करने के लिए रास्ता कौन है, कैसे रास्ता है और कौन उसको उस रास्ता में चलना और उसके बारे में जानकारियाँ, पहले तो जानकारियाँ चाहिए। किसी वस्तु किसी लक्ष्य के बारे में कुछ जानकारी अगर हमको नहीं है तो हम किसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। कुछ न कुछ तो जानकारी जो
सूचना रूपक जो जानकारी है हमारे पास कुछ होना चाहिए, तभी तो हम लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। ऐसे ही वो जानकारियाँ क्या है, किस रास्ता में जाना पड़ेगा, और उस रास्ता में जाने वाले जो उपयुक्त कौन है। सब सारा रास्ता में नहीं चल सकते हैं। बूढ़ा क्या चलेंगे, पहाड़ चढ़ेंगे सीधा पत्थर पकड़ के। हाँ, बूढ़े हैं, ठीक है, चलो गाड़ी में बैठ जाओ, घूम घूम करके पहुँचोगे ऊपर। कौन किसके लिए काबिल है, तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। यह संसार मन से उत्पन्न हुआ। ज्ञान से मन का नाश हो जाने पर उसके कार्य ममता, अहंता, संस्कृति, उपदेश्य, उपदेशादि, बंध और मोक्ष कहाँ किसी से उत्पन्न हो सकते हैं, इसके बारे में हम विचार कर रहे हैं। और मोक्ष मार्ग में हम जब जाते हैं, मोक्ष हमारे गंतव्य स्थल, मोक्ष मार्ग में जाते हुए ये रास्ता में बहुत सारे चीज़ें मिलेंगे, उसको छोड़ करके आगे बढ़ना है। उसी को कहते हैं हम त्याग। वो सब क्या चीज़ें हैं? मन का नाश जब तक नहीं हुआ तब तक रास्ता में मन का बनाया हुआ जो कार्य वो है ममता, अहंता, अहंकार, संस्कृति, संसार का सब रिश्ता नाता, और उपदेश देने का जो विधान है, कोई देने वाला होगा, कोई सुनने वाला होगा। उपदेश्य और उपदेश आदि, बंध और मुक्ति कहाँ किससे उत्पन्न हो सकते हैं, ये सब को थोड़ा बहुत जो जानकारी है हमारे पास सबका, इसको सबको छोड़ करके फिर हम आगे बढ़ेंगे, तभी तो लक्ष्य में पहुँचेंगे। मोक्ष करके कोई चीज़ कहा गया जो सचमुच कहीं नहीं, क्योंकि बंधन नहीं है, मुक्ति क्या मिलेगा। इसी प्रकार ये सब चीज़ को जो मन का खेल करके समझा गया, उसको हमको समझना चाहिए। इसी को संसार कहते हैं। मन ही संसार है। अब उत्तम, मध्यम और अधम अधिकारियों के भेद में 3 मोक्ष के साधन हैं। ये जो 3 किस्म के मुमुक्षु जो इस रास्ता में आना चाहते हैं और उस लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं, मुक्ति पाने के लिए इच्छा रखते हैं, वो मुमुक्त लोग 3 किस्म में बंटे गए हैं। 3 किस्म, कोई तो उत्तम है, कोई मध्यम, कोई मंद, अधम। इसी प्रकार 3 मोक्ष के उपाय कहा गए हैं। यह शास्त्रार्थों के तात्पर्य संग्रह द्वारा दिखलाया गया। सारे शास्त्रों का अर्थ को संग्रह करके उसको 3 हिस्सा में बांटा गया। किसके लिए कौन उपयुक्त है, उत्तम अधिकारी के लिए क्या होना चाहिए, मध्यम अधिकारियों के लिए क्या होना चाहिए, और अधम अधिकारियों के लिए क्या होना चाहिए। जो भोजन आप बूढ़ों को देते हैं, वो भोजन तो आप जवानों को नहीं देते हैं ना। अरे मेरे लिए दलिया बनाते हैं। आप दलिया खा रहे हो क्या? आप तो खूब मौज उड़ाते हो,
सांभर और चावल और क्या रोटी और परोठे क्या नहीं खा सकते हैं आप। अच्छा, और बच्चों को भी दूध या आसानी से हजम होने वाला चीज़ देते हैं। तो इसी प्रकार अलग अलग अधिकारियों के लिए अलग अलग चीज़ होता है। शास्त्रों को इकट्ठा करके, सारे अर्थों को इकट्ठा करके वो 3 हिस्सा में बंटवारा किया है। एक तत्व का दृढ़ अभ्यास, परम ब्रह्म का तत्व, उसके ऊपर हम कल विचार किए थे। तत्व मतलब दैट हुड which is unknown, of course not unknowable, it is unknown of course, but it is not unknowable. We are just repeating our recap, whatever we discussed yesterday. So there are 3 kinds of seekers. They are the first class and lowest class and medium class, that's all. So accordingly, all the essence of the scriptures are divided into 3, fitting to these classes of seekers. एक तत्व का, परम ब्रह्म का दृढ़ अभ्यास, प्राणों का विलय तथा मन का विनिग्रह, यही मोक्ष शब्द के अर्थ का संग्रह है। यानी ये ही 3 मोक्ष के साधन है। यह सब शास्त्रों का निचोड़ है। There are only 3 ways to attain liberation, means the absolute end of everything. These are the essence of all the scriptures. Not only scriptures belong to one school of thought. All the schools of thoughts, all the religions, the essence are these 3. And aim also is one only. It is seen from different angles in different ways. So, he says, one is the strong effort, strong practice of the goal. Strong practice means to remember it, that's all. This is my goal, this is my goal, this is my goal. पहले इधर जब छोटा था, कुटिया था, मेरे पास ज़्यादा कोई काम नहीं था। मेरे पास 20-25 बच्चे लोग होते थे, स्कूल बच्चे। इधर ही रहा करते थे, घर में खाएंगे पिएंगे, आकर के इधर ही रहेंगे। मेरे को जब टाइम होता मैं उनको ट्यूशन करता था। तो मेरा मेथड ये था, जो बच्चे आए नए नए उनको मैं मंत्र उपदेश देता था। बच्चों, मेरे पास रहोगे तो मैं जो कहूँगा ऐसा करोगे, और मैं तुमको दीक्षा दूंगा और मंत्र उपदेश दूंगा। लोगे तभी तो इधर मेरे पास रह सकते हो। हाँ स्वामी जी, आप जो कहेंगे हम करेंगे। बच्चों का क्या है, जो कहेंगे। क्या मंत्र है स्वामी जी? मेरा मंत्र ये था, दुनिया जाए खड्डे में मैं पाठ पढ़ूंगा, पाठ पढ़ूंगा। दुनिया जाए खड्डे में मैं पाठ पढ़ूंगा, पाठ पढ़ूंगा। Let the world go to hell, I shall read and read. Let the world go to hell, I shall
only study and study. This is the mantra I was initiating to the students, new students who come to me. You should repeat it again and again. That means your mind should think of only the studies, nothing else. For a student, there is no world, there is no home, there is no food, no sleep. It is penance. A life of a student is nothing but penance, continuous austerities. So if it is not understood properly, thoroughly, then the students get failure. They don't succeed. So this is the mantra. Let the world go to the hell. I don't care. I shall attend to my studies. This was the mantra I was initiating everyone. So this is how tattva का दृढ़ अभ्यास मतलब the practice of the aim, repeating the aim. This is my aim, this is my aim, this is aim, this is my motto, this is my motto means all your efforts will be diverted towards it, and soon you will realize you have attained it long before. It is nothing new to be attained. It will be revealed to you. यही तो है, यही तो तरीका है। और क्या अभ्यास करना? अभ्यास करते हैं कुछ पाने के लिए। There is a little difference between Eastern philosophy and Western philosophy. Indian philosophy is called Eastern philosophy, and European and all other countries excepting our Japan and Australia, etc., this Western philosophy is known as Western philosophy, Western world, comparing to the middle longitude. India actually in between, and yet it is taken as Eastern country. Japan and other eastern side of Asia and Australia, all these are called Eastern zone. And others, rest is Western zone. So Western philosophy says, search and find. Eastern philosophy says, stop searching, you will get. Just opposite. But it means the same. You are searching for yourself in darkness. Of course you will find yourself. That is true. And if you don't search, you will get the reality. Because you are the reality. So this is how both end in one, but different is there in approach. How do you approach it? Search and find. Keep quiet and you will get. हमारा रास्ता तुम अपने गंतव्य स्थान में पहुंच चुके हैं क्या? गंतव्य स्थल तो तुम ही हो, तुम्हारे घर में पहुंचना था, तुम जहाँ बैठे हो। अभी रात का स्वप्न देख रहे हो कि जाना है घर, परदेसी है, जाना है घर को। घर भी छोड़े बहुत दिन बीते, जाना मिलना मेरे
प्यार है पिता माता को। अरे तुम परदेसी कहाँ हो, दूसरे देश में नहीं, ये घर का रंग बदल गया, तुम घर में सोए हो, अरे सपने में चिल्ला रहे हो घर जाना है, घर जाना है। दिस इज हाउ इंडियन फिलोसफी takes for granted. You are sleeping at your home and you are dreaming. You are trying your level best in the dream to reach your home. This is the difference. तो इसी प्रकार परम ब्रह्म का दृढ़ अभ्यास करना मतलब कंटेम्पलेट, मेडिटेट ऑन द एम। प्राणों का विलय, अनदर वे इज द कंप्लीट annihilation of prana, to stop the prana. Prana is the energizing factor. It prompts everything in this world, including your whole body and the whole world, to activate. The action itself is called prana. Prana, without prana, no actions are possible. So actions means if it is with ego and attachment and desires, then it is bondage. If it is without all this, then it is liberation. So where is the liberation to get it? Inaction is liberation. No effort. So keeping quiet is liberation. Silence is your aim. Is it to be found somewhere else? It is within you. To keep quiet, do you need some effort to be done? It is the easiest and quickest and surest and here and now. It is not the path, but it is the end of the paths. You want some effort, some labor to accumulate something and cook your food and eat, isn't it? If you fast, what do you do? Do you do any effort? That's why one should take vow for fasting and observing something for rest. Your mind will rest, your body will rest, your belly will rest. Everything needs some rest. For that there is no effort needed. इसी प्रकार इसका दृढ़ अभ्यास करना है, चिंतन ही अभ्यास है उसका। यही ज्ञान मार्ग का बोलना है। ज्ञान मार्ग में कोई एफर्ट नहीं है, कोई प्रयास नहीं है। प्रयासहीन होना यही ज्ञान मार्ग है। कुछ नहीं करना। महान आलस्य धूरीण, आलसी बन जाओ। सांस भी लेना कष्ट होना चाहिए तुम्हारे लिए। सांस लेना बड़ा कष्टकर चीज। अरे कौन जाता है सांस लेना यार, नाक में सूं सूं होता, अच्छी सांस बंद कर दो। हाय कितना सुंदर मेरा सफ़ेद सफ़ेद नमकीन वो निकल जाएगा।
है ना, नमकीन अंदर रखा हुआ है। सांस लेना अगर आपके लिए कठिन हो जाए तो फिर तुमको और क्या कर सकते हो तुम, तो उसी का नाम साइलेंस। प्राण को रोकना ये एक रास्ता है, और दूसरा मन का निग्रह करना। तो ये 3 किस्म का रास्ता बताया गया, 3 काइंड्स ऑफ वेज। One is direct thinking of the aim, other is stopping your breathing system, practicing pranayam, the third is controlling the mind. And mind is easy, and also it is the most difficult. How? When mind becomes very subtle and it gets purified, it is in the subtle form, it is the most difficult one. But in gross form, we can stop our mouth. We have seen many kinds of mauna, silence. Just before it, we have discussed it. 4 kinds of silence, and the 5th one is absolute silence, eternal silence. In this way, mind is very easy as well as most difficult, and that is given to the lower class of students. Prana, you must know the trick, or else there is danger. So it is prescribed for the middle class students. And higher class, the graduate class or the master class students, they will practice meditation. And you should know to which class you belong. If a 6th standard student goes and tries to get admission in BA, bachelor class, will he get entrance? Or if at all he belongs to the professor, his son wants to sit in BA class, let him sit. What will he get? He will sleep and snore there. What else he will get? So this is how the qualification of different 3 classes of seekers, and these are how it is divided. Swamiji, Yes. let us say that a seeker, a sadhaka, is incompetent in pursuing the Dhyan Marga. Then what will be prescribed for him or her? Now this is what we are discussing. The middle class students should adopt pranayama and yoga way, and 3rd class students should go on practicing yama, niyama, and all these tirthatan, and all these start with satsang and hearing and practicing little by little, and going for the yatra and attending to lectures and speaking it out, hearing something and speaking it, nothing understanding, and becoming a tape recorder. Swamiji, वही अंदर में एक शब्द, one word is missing.
उत्तम मध्यम नीच लघु सती अनुसुईया सीता माता ने कहा रामायण में। Ah, और भगवत गीता this is what we are discussing. और भगवत गीता भगवान कृष्ण ने कहा चतुर्विधा भजन्ते माम। और if the devotee definitely is forgetting, incapable of learning and all of that, does that shabd fit in as laghu? Don't mix up examples and classes. The same actions are classified in different ways. Which way you are following? It can be 3 ways, it can be 4 ways, it can be 8 ways. From which angle, from which side you are looking at it? The same thing, same thing. The devotion is differentiated in 9 ways. So, and in 2 ways, the same devotion, para and apara. The words are divided into 4 categories. Same words. So, in what way you are classifying it? As you like. It can be 4 ways, it can be 3 ways, it can be 2 ways, it can be many ways. There is no difference. The same thing. How many pieces you want to make one potato and you want to make curry out of it? Is it fixed? If you want to make 2 pieces, I want to make 4. What harm is there? No difference. No difference. It is the way to classify it. Same thing can be classified in many ways. वही नहीं चलना तो है, पर रास्ता तो बहुत उसका। कोई बोल सकता है स्ट्रेट वे, जिगजैग वे, क्विक वे. Any way you can classify it. Foot tracks, motor roads. Any way you can classify it. Yes. Guruji, how to gauge Uttam, Madhyam And we are telling now. And you have to know. You have to know yourself. If you don't know yourself, then what will you know? How much effort you can do? Sometimes the children, out of anger, they fight with the elders. Don't do like this. You will get 2 slaps. You have to understand where do you stand. None else can tell you, my dear, you belong to 6th standard. No. You know your certificate. Self-known. Swamiji, in the last class there was a question you were going to discuss today. She was asking a question. Yes. The question was, what is the benefit from understanding this or Yes, achieving yes, it? what is the benefit? Nothing else. Of course, we shall come to it. Let us finish this topic. तो हुआ क्या, एक तो तत्व का दृढ़ अभ्यास, मेडिटेशन, एंड दूसरा हुआ प्राणों का विलय, योगा हुए स्किल ऑफ एक्शन and controlling the energizing factor, acting factor, so that everything will stand still. And the third is to deal with the mind. Mind is not easy, so easy. And the same thing
is discussed in common parallels from different angles. Same thing. You see, there is a formula of meditation and all this practice. Of course, this is in short, and we are discussing these three classes, the first class, second class and third class. But generally we see there is some formulas, we have to apply it. Our aim is to silence everything, prana, mind, body, senses. So meditation or samadhi or achievement of goal becomes automatic. That is the aim of our practice. It should be automatic. It should be in our hand. Just like the fruit in your hand is not seen in darkness, but in daytime it is so clear to you. It is within your limit. It is already achieved. हस्तामलक उदाहरण देते हैं। तो जो हाथ में है उसको देख नहीं पा रहा है तुम, तो उसको देखने के लिए कितना देर लगता है। लेकिन उसी को हम जो अंधकार का दूर करना है, ये प्रयास कौन करेगा? अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा। अंधकार को दूर करने के लिए कभी आलोक का भी प्रयास नहीं किया, आलोक का कभी प्रयास नहीं हुआ, अंधकार तू दूर हो जा, मेरे से हट जा। There is a story, of course a story, concurrent story. Two brothers and sisters, they were fighting against each other. They were very loving children. They loved each other, but the fight is there only when there is love. So they were fighting. The sister was young. She could not fight with the elder brother. She went to the grandfather. Grandpapa, brother is always chasing me and beating me. Please control him. Ask him not to do so. So the grandfather says, where is your brother? Call him. I shall make him all right. Call him. Bring him before me. The sister goes to chase the brother, whereas the brother was chasing the sister. The brother was chasing the sister, young sister, to give some slaps. And now the sister goes to grandfather and complains. So grandfather says, bring him before me. So now sister is chasing the brother to give him his punishment. Till now, both are chasing each other, eternally chasing. Nobody is able to catch the other. Huh? Circle? No. Darkness and light. The sun and Rajni Rani, the younger sister, the son, the elder brother.
And grandfather is Brahma. Who created this too? Similarly, of course, the day cannot touch the night, nor night can find out the day. So here is such case. And leaving it aside, we can come to the formula. Formula is, you should practice whatever is up to your choice. The best choice, you can get good result very quick. Quick result is in your best choice, whatever you have chosen. The quality depends upon your choice. When you go to the cloth shops, many kinds of clothes, same color, you will have different qualities. It is on you what to choose. Fruits also like that. Vegetables also are like that. So your lifestyle also is like that. You have to choose your own desired things. So now coming to meditation and practice, what do you like best? Come on. This is the formula. What do you like best as a person? Come on. One's own self. सबसे प्यारा क्या है आपको? मेरे को समझ नींद सबसे प्यारा है। ठीक है। और किसी को कोई चीज प्यारा है? मेडिटेशन? ओ बकवास। झूठ बोल रहे हो। आपको क्या प्यारा? भोजन? आपको? मेरा कुछ प्यारा है। अच्छा अच्छा, मेरे आगे आगे 10 फीट आगे चल रहे हो। अच्छा क्यों सोते हो? नींद तो सबसे प्यारा है, कोई दो राय नहीं। क्यों सोना चाहते हो? आनंद मिलता है। किसको? शरीर को। शरीर को चाहिए आनंद। तो ये मन शरीर रेस्टू, शरीर को रेस्टू चाहिए, तभी तो सोते हैं। और शरीर थका हुआ तो कोई काम हमको पसंद नहीं आता। नींद तो शरीर के ऊपर है। शरीर का काम काज सब छोड़ दो, चलो आंख बंद कर दो। शरीर और इंद्रिया तो अब कौन सा प्यारा हो गया? किसको रेस्ट चाहिए? सबसे प्यारा किसको नहीं है? शरीर बेचारा। शरीर को कौन नहीं चाहता है? दिन रात इसके पीछे पड़े हो। चलो स्नान करो, चलो इसको साफ करो, टटी जाओ, चलो इसको मुंह धो लो, चलो दांतुन साफ करो इसको, चलो तिलक लगाओ, बाल काटो, हाँ कान साफ करो। दिन रात इसके पीछे पड़े हैं। नहीं? Do I speak a lie? Don't you love your body better than, more than anything else? Speak the truth. Yes. Not out of fear.
I have to support Swamiji or else. Swamiji, this is not the way. Body is dear to everyone. On body basis we feel hunger, thirst, and we decorate it, we protect it, and this is given to us to keep it properly. That is our Nitya Naimitik Karma, Nitya Karma, our daily routine work. We have to protect this body. This is an instrument, beautiful instrument given to us. We should preserve it, protect it properly so that we can take work out of it. Everybody likes his body the best, more than anything else. It is practical proof. देखो आजकल ब्यूटी पार्लर्स कितने पनप रहे हैं। है कि नहीं? और देखो आजकल कितने फैशन बदल जाता है हर रोज। मुर्गा कट क्या क्या नहीं करते, हाँ, मूंछ, आइंस्टाइन कट, इंदिरा कट बाल, क्या फैशन नहीं करते हैं। लड़कियों को देखो, लड़कियों तो सबसे ज्यादा प्यारा है शरीर, इसको सजाते रहो, क्योंकि ये माया का स्वरूप है, तो सबको अट्रैक्ट करना है, फंसाना है। ये तो पुलपटी है। तो जैसे भी हो, शरीर सबको प्यारा, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, स्त्री से लेकर पुरुष तक, गरीब से लेकर धनी तक, बच्चा शरीर सबको प्यारा है, ये कोई दो राय नहीं। उसके साथ साथ दूसरा क्या प्यारा है? द सेकंड यू लव मोस्ट। प्राण किसी को प्यारा नहीं भाई। कोई मरना चाहता है क्या? है? कोई बूढ़ा मरने के लिए चाह रहा था, अरे क्या करूं, ये बूढ़ी मेरे को जीने नहीं देती है, खाना पीना सब हराम कर रखा है, मैं मर जाऊं। तो घर वाले सब कहे हाँ चलो कोई बात नहीं, मरो, आपत्ति जाए। मैं जा करके कुआं में कूद करके मर जाऊंगा। बेटा थोड़ा लांटन लाओ तो कहीं सांप बिच्छू मिल जाएंगे रास्ता में। थोड़ा टॉर्च लाइट दिखाओ, मैं जा रहा हूँ कुएं में कूद करके मरूंगा। हाँ, ये हालत होता है, मरना कोई नहीं चाहता है। एक सच्ची घटना मैं बोलता हूँ। मेरी कुटिया इधर थी, पत्थर के ऊपर झोपड़ी। एक दिन मैं बाहर बैठा हूँ, लगभग 2-3 बजे बाहर बैठा हूँ बरामदा में। देखा वहाँ से गंगा जी दिखता था। वो कोने मोड़ में गंगा जी में एक औरत को दूर से मैं पहचान नहीं रहा हूँ। एक औरत को एक कोई पुरुष खूब पिटाई कर रहा, उसके बाल पकड़ के ओ दे दनादन मार रहा है। मेरे को दिखा नहीं गया। मैं गया, धीरे धीरे जा करके पहुंचा, फिर पहचान में आया दोनों। तो मैं बोला डोभाल जी ये क्या कर रहे हो? अरे माता जी को इतना क्यों मार रहे हो? ओ गुस्सा में था। स्वामी जी ये गंगा जी में कूदने के लिए आई है और कूदती नहीं। मैं आया उसको खींच करके गंगा जी में डालने के लिए। ये सच्ची घटना।
घर से भाग करके आई डराने के लिए सबको कि मैं जाती हूँ गंगा जी में छलांग लगा दूंगी। दो सौत थे, दो पत्नियां थे, आपस में लड़ते। और वो थे कोई चीन के, ये हमारा जो आ रहा है ना, ये क्या हमारा डोभाल जो काम कर रहा है अभी ऊपर छत में, उसी का पिताजी, बुढ़ा पिताजी। दोनों पिताजी माता सब गए हैं। उसी का पिताजी था। मैं उनका हाथ जोड़ा, बेचारा चाहते नहीं, क्यों जबरदस्ती मारते हो यार। फिर बड़ा मुश्किल से उसको कहा आप जाओ। मैं फिर माता जी को समझा करके फिर घर भेज दिया। वो उनको धमका कर आया था मैं मरूंगी, और बूढ़ा भाग करके आया, कहा तू राण मर मेरे सामने। क्या कमाल। Nobody wants to die. Simply telling, suicide is not a matter of joke. Unless one suffers to its level, he will not try. And unwillingly he jumps to Ganga. वैसे ही स्वामी जी एक आदमी प्रार्थना कर रहा था भगवान से, भगवान मेरे को उठा लो, मैं परेशान हो गया जिंदगी से, बहुत इतना महंगाई बढ़ गया, बीवी भी सुनता नहीं, बच्चे भी बात मानते नहीं, बीमारी अलग हो गया, इतना दंगा हो रहा है, सब मैं परेशान हो गया, दुखी हो गया जिंदगी से, उठा लो मेरे को। भगवान बोला ठीक है, वो कोविड-19 का स्कीम खुला है, आ जाओ। तो फिर कह रहा अरे भगवान याद आ गया, सब ठीक है। क्वारंटाइन के लिए। वो ऐसे ही सरदार ने बोला भगवान उठा लो, परेशान हो गया। भगवान आ गया उठाने के लिए। चलो कह रहा लो, बूढ़े बंदा मजाक भी ना करे। In essence, nobody wants to die. So prana is dearest object for everyone, body and prana. For the protection of body, prana is a must. सिर्फ ज्यादा बीमार होगा तो छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब जाना चाहिए। Because of body only. If body is not working properly, then only we need death. If it is working properly, we need all the enjoyments of the whole three worlds. Who wants to give up? And then comes a third, one who is always worried because of problems. The mind creates the problems. So we want to have the mind pure and steady and worryless, problemless. Of course, mind everybody wants. So this is how, this is the formula to steady it. The third class people can steady the body. It is so easy, so gross. Anybody can forcibly or willingly can steady the body. That's why it is said asana fast, steadiness of the body. In Raja Yoga, before of course, you have to practice little codes of conduct, that is called Yamaniyam. You should know how to lead your life. That is called Yoga Yamaniyam. And then you should practice with the body. Body is fast. So asana
and of course different poses of asam, that is called bandha, mudra, etc., etc. And to preserve this body by cleaning in different ways, in and out, they are prescribed in Hatha Yoga and other parts of yoga. And then we start pranayam. Then only we deal with mind. Prana is next to body. So vipassana and other methods, just go on looking at the prana. Whatever you go on looking on, mind is fixed there indirectly without any effort. Body is so dear to you, just sit calmly and look at your body. That's all. Whether with the open eyes or closed eyes, just feel your body. In no time, the prana will be steadied, mind will get steadied. Hardly half an hour, if you go on looking at your body without break, hardly half an hour, your prana will become slower and it will stop by itself because it is closely related with the body and the actions of the body. And when prana becomes slower, the mind also helpless, no support. Mind has to slow you down. And if you go on practicing these two, awareingly or unawareingly, then mind stops after some time. Of course, it is not so easy. It slips away, it works in a subtle way, it cheats you, but it is attached with the prana and body. So when these two gets steadied for a long time, prana cannot go leaving all these two. No way. It has to stop. It is indirect attack on the mind. So in this way, three ways are most important and most famous in the society of seekers. They know it. A sincere seeker knows it directly or indirectly. I have to deal with the body. If your body moves, prana has to move and mind has to become restless. So they say, sit calmly without moving your body. That is called attention. Don't sit at ease. That's how one can hear properly, all the senses do properly, and prana also becomes rhythmical and it will not flow irregularly. By itself, everything is taken care of by the nature. These are the easy ways, and these are also three. The triangular society, relative society, cooperative society, triangular cooperative society. This is how our life works. So any angle can be up, other two will be base. Anyone you can keep up. A, B, C, which is the upper angle. Any way you can name it.
Come on, tell me the fourth finger. Like who? Fourth finger. Oh, depends on the Is it fourth? Or this is fourth? anyone can be first family. This is how the cooperative cooperative society, triangular cooperative society. So, अभी हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं 3 किस्म के मुमुक्षु जो क्वालिफाइड हैं। ये 3 किस्म का अभ्यास के लिए इसी प्रकार यही मोक्ष शब्द के अर्थ का संग्रह है, यानी यही 3 मोक्ष के साधन हैं। 3 मोक्ष के साधन बता दिए। मैं भी अपना जो कुछ थोड़ा बहुत दूसरों से सुना हूँ उसको भी 3 रास्ता बताया। वो 3, ये 3 में कोई अंतर नहीं कोई अंतर नहीं, खाली नाम में अंतर है, प्रोसेस तो वही है। और ये 3 को भी हम 4 भी बता सकते हैं, 5 भी बता सकते हैं, जिसको जैसा आया। जिसको जैसे आया रे बाबा हाथ उठाकर नाचो रे बाबा। क्या डांस का कोई एक ही तरीका है? कथक डांस है और उड़सी है और क्या क्या है, भरतनाट्यम है, भांगड़ा है और डांडिया और झील, वो क्या गरबा, और ये रिमझिम क्या कहते हैं वो जो झन झन होता है, अरे लेजिम डांस और है, हाँ कथक। शादी में नागिन डांस भी होता है। नागिनी डांस, dance as you like, you are dancing. So it depends upon you. And you must know the name of your class of your dance. Is it Nagini or it is Kathak or it is some other dance? So you must know where do you stand. अब राम जी पूछते हैं। Now राम जी starts. Of course, इन तीनों में मध्यम के ऊपर श्री राम जी आक्षेप करते हैं। हाँ कुछ ऐसा कैसा हो जाएगा? मध्यम कौन है? प्राणों का, प्राण का विलय कर देने से मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्या बात करते हो गुरुजी? मेरे को मारना चाहते हो क्या? मैं तुम्हारे दुश्मन हूँ क्या? है क्या ना पाप किया था मैं? आपसे पूछ बैठा। राम जी had some complaint against the middle class. Prana. Let us see what is the question. इन तीनों में मध्यम के ऊपर श्री रामचंद्र जी आक्षेप करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा है, मुने यदि मोक्ष का कारण प्राण का नाश ही है तब तो मैं समझता हूँ कि मरे हुए सभी प्राणों मुक्त हो जाते हैं, सभी प्राणी। अभी मैं मरूंगा ये तो बड़ा आसानी तरीका है। राम जी आज हाँ वही तो पूछ रहे हैं। राम जी इज आस्किंग
Oh, revered one, if prana vinas means death of prana, end of prana is way to liberation. So I think all who are dead should attain mukti. This is what the easygoing people take for granted. Charbak people. Rinam kritva gritam pivet javat jivet sukham jivet. हाँ क्या हुआ वासिमे भूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतः क्या पुनर्जन्म कुतः कहाँ से दूसरा जन्म where is the second body, next body, where is it? When the body dies, how can we believe the future body? No. Who knows what body, where is the body? As long as this body is there, just eat and drink and make merry. No, that is also making some loan. Yes, you should take loan from others and enjoy your life. Let the sons, grandson pay back it. What do I care? मुफ्त मिलने से खरीदना हाथी. हाँ, पैसा ऋण चुकाएगा लड़का का नाती. हाँ जी. सानू की खाओ पियो मौज करो. So in this way, Ramji has some doubts. If this is the way, this must be easiest way. Everybody dies. So everybody is directed towards the Vaikuntha. So he has misinterpreted the death. Ramji. This is what happens to the people who misunderstand the meanings of the scriptures. This is but natural for a ordinary student. Ramji is not Ramji, he is our representative. He is arguing for us. श्री रामचंद्र ने कहा है मुने, यदि मोक्ष का कारण प्राण का नाश ही है, तब तो मैं समझता हूँ कि मरे हुए सभी प्राणी मुक्त हो जाते हैं. If you get liberation, freedom from bondage, when the creation gets dissolved, everybody should get realization. Everybody should be liberated. What do you think? Come on. At least our opinions. So the puzzle is for tomorrow. Now, if we discuss all this, what do we gain? Why we should break our head for all this? Why not for bhandara, pasta and pizza? What do we get from it? 1.5 hour. Useless. हाँ जी, दोस्त कहीं है मेरा दोस्त? अब आ गया है? क्यों सिर फोड़ रहे हो यार? नारियल ले लो, सिर फोड़ के क्या फायदा? नारियल फोड़ के खाओ. आज वैसे भी शनिवार है. तो क्या करोगे? नारियल फोड़ोगे शनि के पास? मिलेगा क्या यार? फालतू इतना समय बर्बाद करना. इससे अच्छा था
कुछ तुड़का मारे, फ्राई दाल, coconut chutney, break your head and make chutney out of it. I would like to lick it. Come on, बोलो क्या मिलेगा इससे? कुछ नहीं स्वामी जी। शाबाश। हे भगवान, बात तो सही। Nothing we get. That is absolutely right. Nothing. So, are we trying for spending all our energy for nothing? You have to understand, this is our aim. My dear, there is nothing to get. If you have understood this much, you have understood all the scriptures. So simple fact. We have to get nothing. It should be absolute nothing, Absolute nothing. not ordinary nothing. You are 100 meters ahead of me. Very good. Really we get nothing. हमारा दोस्त बड़ा चालू है। कुछ नहीं मिलता है। अरे कुछ नहीं मिलने के लिए तो इतना अभी तक what till now what have you got? Come on. You have spent your life. What have you got? How much you have eaten? What is the consequence of all these truckloads of food? How much time you have spent? What have you achieved? How much head you have broken? Studied so much. What for? What do you get? You have traveled over the world. What have you got? So one has to always ponder over what is the consequence of our all these efforts. What do you really want to get? Come on, tell me. What do you really want to get? So to understand, we get nothing, and that is our goal. We are breaking our head. हमको कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, तभी तो वो जो हम कर रहे हैं, सिर फोड़ो और इतना करो, ये सब कौन जाए करने के लिए यार? चुप हो जाओ। लेकिन हाय रे विधाता, चुप होना तो सबसे कठिन है। Can you keep quiet to get nothing? This is the most tedious job. Nobody can keep quiet. You are trying every moment to get what? Ponder over this. Contemplate continuously. Ahoratran sandadhami. Day and night, make it one. Go on searching. What do you want? Answer is from you. You have to answer yourself. Nobody is there to answer your question. What do you really want? What is your need? That is the first question, and then we shall discuss what do we get from it. This will be second question.
The first question is, what do I really get? What do I really want? What is my need? And then and there, if the mind replies in some way, I want pleasure. So till now, since your childhood, have you not got any pleasure? So your life is a waste? Will you accept it? Whatever you have done, you have learnt, you have toiled hard to get so many things. Yet you want something else. Why? Ask your mind. Till now you have not got anything. What does the mind answer? Strange, what fool we are. Nobody is serious to think this question, what do I really want? And what have I got? What does belong to me? Are you able to answer these questions? Fundamental questions. Before we go to the scriptures and satsang and discussing serious matters, this is common fact. A child can answer it. So simple questions. But if you think seriously, nobody has cared to answer this, nor anybody can darely answer these questions. Looking for happiness, Swami, all the time. Yes, but have you got it? If you have not got, your life has been a waste. Damn you. Damn your all efforts. Go to hell. Leave it all. Is it not the consequence? Is it not the final decision? If till now I have not got anything, I want happiness, no happiness till now, then is it not a waste, whatever I have tried? Why don't you think in this way? The first question, what do I really need? Really. Who is this I who needs happiness or anything? Of course, we are ignorant persons, that is the first question. Very hardly one can go to such depth. That is the first question, who am I? Enquire who am I, know thyself and be free. This is the easiest way. But who can enquire, who wants to enquire, who am I? Gurudev always used to sing this song, enquire who am I, know thyself and be free. All the saints and sages, they repeat the same formula. Know thyself. Who are you? We don't know, I don't know myself, but I want to know all about that Russia and Ukraine fight. What is going to happen to this world? What did Nostradamus say about the world? I don't know who am I. I don't want to know all this. Is it not foolishness? What a fool you are. Is it an abuse
or it is praise, or it is the real state of every one of us. One should understand his own status. That's why I always repeat it again and again. Know where do you stand. What is your identity? How do you define you? These are the indirect language. Direct language is inquire who am I, know thyself. So this is what we get. Get nothing, and there is nothing to get. Final. You get everything out of nothing. That nothing is everything. If the door is fully open, it is fully closed. So now we shall come to our subject. Vasisht ji says, उक्त तीनों भी उपाय मन के विनाश द्वारा ही मोक्ष के कारण होते हैं। मन के विनाश द्वारा ही मोक्ष के कारण होते हैं। Ram ji asked the question, if the death is the final, and that is the end of your mind, body and prana, mainly prana. When the prana stops, generally we say the body is lifeless. That is called death, lifeless. The prana has gone away. Prana has left the body. These are the language we use for death. So prana is important in death or in life also. So Vasisht is giving the clue. My dear, all these three are the ways to attain moksha, the liberation. So the end of prana means end of, it should be understood in this way. The end of body means end of not the prana, not the mind. Prana remains in a subtle form. The death of the pot doesn't mean death of the sky. Did you follow? Death of pot means breakage of the pot is not the breakage of the sky inside it. Prana, the air. Have you broken the air, what was there within the empty pot? What happened to that air? So what happens? He explains, death of body is not death of prana, death of mind also. It is not so. But moksha is these three, death of body and prana and mind together is way to the liberation. That means if the body's death is seen, it should mean also the death of prana and death of mind. Three in one. It is seen from different angles. Three angles are, it belong to the triangle. Without these angles, there is no triangle. How can you separate one angle from the triangle?
all the three should stop eternally. That is called liberation. So Basit is explaining, तीनों भी उपाय मन के विनाश द्वारा ही हैं. All these three ways lead to the death of mind only. Mind is the root cause. Prana is supporter, body is helper. If you want to destroy the whole garden, you have to destroy of course, the gardener and all the instruments and all the plants. Triangular force makes a garden. Everywhere we see. So he says all the three should be stopped or stopped forever. That is called the end of all these three. विनाश इसका मन के ही विनाश द्वारा ही मोक्ष के कारण होते हैं. Unless and until mind is stopped, these three cannot be the way to liberation. Only when mind stops, योगा क्या बोलता है? चित्तवृत्ति निरोध, प्राणवृत्ति निरोध नहीं कहा. Yoga doesn't say the stoppage of prana, stoppage of bodily actions. Never it said so. It told us the stoppage of subconscious mind functioning. Vritti means the functioning. So, you should understand, everything is aimed at stoppage of the mind only. When it is destroyed completely, mononas, destruction of the mind, then only liberation is called attained. तो फिर anyway, let us see tomorrow. प्राण का और शरीर का नाश होने से मन का नाश नहीं होता है. और ये कैसे नहीं होता है, इसके बारे में पहले भी हम चर्चा कर रखे हैं. ये तो शॉर्टकट में दे रहे हैं, हम अच्छी तरह देखेंगे. क्या शरीर मर जाने से मन मर जाता है क्या? प्राण मर जाता है क्या? क्या होता है जीव को मरण के बाद? व्हाट हैपेंस टू द सोल आफ्टर डेथ? We have discussed it long before. Yet we shall see a little. What happens to the soul after death? What happens to the mind after death? What happens to the prana after death? And body too. What happens to the body? Body will perish. Body? Body will perish. Perish means France. What do you mean by perish? Is it complete destruction or it is partial destruction? What is the real meaning of perishability? Existence of body is something which has come from something and it has gone into. If the water has become vapor, do you call the destruction of water? If the water has become snow, is it destroyed? And if it has become clouds, do you say it is destruction of the water? Combination of elements. Yes. So what do you mean by death? That we shall see tomorrow. Be ready for fight. मरने के बाद इसीलिए तो 13 दिन का वो चलता है. कुछ नहीं खत्म होता है यार. 13 दिन क्या और क्या?
का तो 13वीं के बाद 8वीं मान लेते हैं कि सब मुक्त हो गया तब भंडारा करते। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्दा ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। आप लोग जो भी सुन रहे हैं इसको थोड़ा सा जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि 25 तारीख शाम को स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का शताब्दी जन्मोत्सव